आमे नॉर्मली इनएक्सेसिबल एरियाज रे रनर्स व्यवस्था रखू जो मानकर कर्तव्य है से माने जाई करी इनफॉरमेशन कलेक्ट करी करी पूरी नेटवर्क एरिया रे आसी करी आपको खबर करती किंतु रिस्क नेवाटा उचित नुह से आम केतेक अंचल फिगरटा टे स्लो आसुची बिकॉज सेफ्टी ऑफ पर्सनल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन गेटिंग फिगर्स फॉर अस एज ऑफ नाउ। तो वर्तमान आमर जहाँ मुझे कहली टेंटेटिव फिगर अच्छी 63 and 64 in between that. This is very likely to change and आज वर्तमान जो जो जगह चारिटा सुधा चुनाव थिला समय निर्धारण कराई थिला से जगह किसी लोक थिले केतेक जगह लोक थिले कथा थी पाटनागढ़ रे गोटे बूथ रे लोक थिले सब कलेक्टर सांगे जो आरो अछंती कथा हेली लोक छिड़ा होती एमती केतेक बूथ रे लोक अछंती जो पोल करुछंती प्राय सरीबा को आसन जहाँ 4टा बेड़े थिला किंतु जो जगह 6टा अच्छी निश्चित भाव में अधिक समय आहरी लागिबो तापरे पोलिंग पार्टी सीलिंग करेंगे तांकर जो प्रक्रिया रही फॉर्म 17C देवे तापरे से पहुँचे पहुँचला बेल को निश्चित भाव में राति देरी हो जाए 12-1 बाजी जाए जमती गत थर आपन को तथ्य दिखाई आम वंस वी गेट दि डिटेल्स सठिक तथ्य आपन को निश्चित भाव में आम आसंता काली देवु। यहाँ है गोटे बिंदु द्वितीय बिंदु है जो मुझे जो घंटे आगु जो आपन को चर्चा करी अबाउट क्रॉस वीवीपैट क्रॉस मैचिंग और क्रॉस रिप्लेसमेंट वुड बी द राइट वर्ड कारण मशीन खराब है जो रिप्लेसमेंट करागला बहुत सही दिखाई सम चैनल्स जे जो लोकों को भाषा बुझेबाटा एक्चुअली आम जिते कथा हो आम टेक्निकल भाषा कथा हो किंतु मु देखली धन्यवाद देवा चाहिए आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द चैनल से कहले कि लोकसभा प्रार्थी जो मत जो वीवीपैट जगह विधानसभा प्रार्थी लगे दिया तो गाँ गंडा लोक यही भाषा बुझंती आम कहूँ एएस एसी किंतु गाँव लोक जो एक्चुअली भोट देवा जाऊँ से बुझी पारे तापाई मुझे आपको धन्यवाद देवा चाहे कि आप सठिक भाव प्रस्तुत कर मुझे आपको 2टा बूथ आम खबर पाई 4टा गोटे थी 129 ऑफ बनाई एसी 14 बनाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी आ गोटे थी 9 सुंदरगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी बूथ नंबर 213 ये 2टा तो मुझे कही सारी कि गोटे केस रे बेसिकली इट्स अ क्रॉस असेंबली सेगमेंट जगह असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी जो आप कहले लोकसभा मशीन रे विधानसभा वीवीपैट लगेगा और विधानसभा वाला रे लोकसभा वीवीपैट लगेगा सहीपरी 13 कंधमाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी रे 121 दसपल्ला असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी जोटा अच्छी से बूथ नंबर 210 और 222 रे ऐसे ही प्रकार त्रुटि होती तापरे आउर खबर आसला कि बरगढ़ जिले में 03 बरगढ़ विधानसभा क्षेत्र रे बूथ नंबर 68 एवं 4 अताविरा विधानसभा क्षेत्र रे बूथ संख्या 235 आमे भी आकलन करुचु कारण चुनाव आयोग भी निश्चित आकलन करेंगे कहीं ये प्रकार जो मिस्टेक होची लोकों और यार कौन प्रतिकार करा जाई पारे कारण कलर कोडिंग तो अच्छी किंतु आउ कौन निया आगामी दिन में निश्चित भाव में चुनाव आयोग भी चर्चा करेंगे और जो मुझे कही कि जो अधिकारी कारण गुलाबी कलर और धड़ा कलर पहचान चिन्हवाटा एत कष्टकर भी नुहे तो चुनाव आयोग यार रखी सुरक्षा कि भाई जिते बड़े आप चेंज करेंगे आप जानवे कि कौ मशीन को क्या सांगे लगाऊँ कारण पारदर्शिता आम सर्वोपरि अच्छी ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी बिकॉज इंडियन इलेक्शंस आर अबाउट क्रेडिबिलिटी और सेटा को दृष्टि रखिक मुझे आगु भी कही ऑलरेडी आमर 4टा रिपोर्ट जो पड़े आसाला बूथ नंबर 210 222 और 10 पल्ला और बूथ नंबर 129 एंड 213 ऑफ बनाई एंड सुंदरगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी यार विस्तृत रिपोर्ट चुनाव आयोग को ऑलरेडी पठे दिया बरगढ़ रे आमे रिपोर्ट अपेक्षा करुचु और आसला परे आमे तार रिपोर्ट मध्य पठेबू और ये सबू जगह रे आमे सानी निर्वाचन पाई अनुरोध करुचु चुनाव आयोग
सेकंड दीटा भी सही प्रॉब्लम exactly same so as of now 6 as of, let me just I'm just completing so Bargarh 68 and Attavira, these are two assembly constituencies. Bargarh booth number 68 and Attavira booth number 235 ei duita jagah re bi sei cross replacement of the VVPAT machines has been reported. As of now 6 booths have been reported where this kind of problem has come. Yes sir commissioner lockdown होई नथिला एई प्रकार र कोनसी एबे पर्यंत खबर आसीनी पोलिंग टीम इंस्ट्रक्शन रहछि जरवंदा को हां मु कहि दोछि देखन तू जते बेले पोलिंग पार्टी फेरंती तांकर फॉर्म 17C रो विस्तृत जांच करा जाए जांच कला परे प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी देखा जाए सेही प्रक्रिया पूरा राती सारा चलिबो सेते बेले जानी पारिबे काहे कि कथा ऊपर चली पारिबोनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी रे कोन लिखाई छी तांकर विस्तृत विवरणी थाए whether poll was adjourned, whether any untoward incident happened, whether mock poll was done or not. गत थर आम चुनाव रे देखिथिलु आपण माने भी जानथिबे जो भाई माने कवर करथिले बीजेपुर बाई इलेक्शन रे कि तीनटा बूथ रे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थिले से मॉक पोल डेटा क्लियर करबा को भूली जाइथिले तापाई भी आमे कमिशन को आदेश आनी करी तार प्रक्रिया रही मॉक पोल रे जदी डेटा क्लियर करि नांती मॉक पोल रो स्लिप टा काढी देथिले ताको गोटे कला खामार रखा जाए तो आप परमिशन आनी करी तापर ताको गणति करा जाय पारे सो दोस थिंग्स कैन बी टोल्ड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म 7 मॉकपोल तो कंपलसरी आई होप यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज व्हाट आई एम सेइंग मु कहूची ए विषय रे आपण जो प्रश्न पचारु छंती एटा गोटे काल्पनिक प्रश्न मो पाई वर्तमान मु अनुध्यान न कला पर्यंत मॉकपोल निश्चित भाव अछि मॉकपोल एटा मते विषय जड़ा पड़तांदा सर आपण का मु कहूची मॉकपोल निश्चित भाव रे अछि किंतु मॉकपोलटा हेछि कि न हेछि से विषय रे वर्तमान कहि पारे सर मु कहूची आई अगेन रिपीट 14 बोलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मु प्रथमे कहूची बरगढ़ रे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रो नंबर होची 3 बरगढ़ विधानसभा क्षेत्र तार बूथ संख्या होची 68 68 Oh, sorry, but see, I beg apology. I will say it in English. Bargar, booth number 68, 68, right? And so, thank you for correcting me. See, as I said, errors happen only from human beings, and I am also human, right? And Attabira is booth number 235, right? Kandama, it is 210, and booth number 222. In Bonai, it is 129 of Sundar PC, 14 Bonai Assembly Constituency, and in 9 Sundar Assembly Constituency, it is booth number 213, right? And if any further thing happens, we will keep you updated through the WhatsApp group of the media that we have. Sir, whether any new general observer has joined Sambalpur, sir? Not as of now. As of now. Dharmendra Sharma has reached booth in Sambalpur, sir? I have no idea about this. I've been busy with the elections. Nothing as of now. In fact, जहाँ भी आमे दिन सारा फोन में थिलु और जो जगह भी किसी खबर आसिला प्रार्थी माने भी केते बेडे आमको फोन करी कही छंती कि अमुक जगह रे गाड़ी बुलुची सो इमीडिएटली वी गॉट इन टच विथ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एथरा आमे गोटे भलो काम करथिलु सिटिंग हियर राइट फ्रॉम हियर वी कुड कांटेक्ट द बीएलओ आमे पूरा राज्य रो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो अछंती तांकर नंबर मैप करी करी ताको कहले .vcf फाइल आपण जते मोबाइल रे आपण गोटे कांटेक्ट क्रिएट करंती इट इज इन द .vcf फॉर्मेट तो आमे एटा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आमे कोन करथिलु कि सब बीएलओ सब सेक्टर ऑफिसर जो माने एक्चुअली क्रिटिकल एज लेवल रे अछंती काहे कि जोगाजोग होची सबुट क्रिटिकल चीज आमे जेमती खबर पाउथिलु आमे जते वेबकास्टिंग में देखलु कि दुटा पिला जो
वॉलंटियर्स थिले से गोटे बूथ रे देखा पाइलु कि से माने नहीं जाइछंती ताको व्हील चेयर रे तापरे वोटिंग कंपार्टमेंट पाखरे छिड़ाइछंती जदियो देखि पारिबे नै किंतु आमर रहउछि कि भाई आपण सेठू हटी जांतु वोटर वोट देला परे पुणी जांतु सो दैट जो सीक्रेसी ऑफ वोट अछि से पूरा साब्यस्त रहला कथा तो आमे जत्ते बेडे वेबकास्टिंग रे देखिलु इमिडिएटली बीएलओ को फोन करू आमे देखि पारलु कि बीएलओ से फोन धरि कि आम संगे कथा होचंती एंड वी एंश्योर दैट द प्रोसीजर इज फॉलोड so it is a very good system subject to availability of internet connectivity because network nothile apna kari paribe nei but it's a very good system and in future elections not in the third and fourth because we have limitations but in future elections probably it is one of the best weapons whereby you can actually control the elections right from the center as I said with regard to the BLOs now we were able to contact the booth level officers immediately in real time and get the things correct. Sir, how many booths voting have been completed by 4 p.m.? No, that figures we don't have. That see, those are figures which I will give a wrong figure. Why should? Because this is happening in the field. We are sitting here. So, and places like Firingia, why should I put my people into trouble? So, there are different. Mr. Mohammed Mohsin is still in Sambalpur? I have no idea on that. सर दूसरे जहाँ रही जे लोक माने वोट वर्जन करछन जो सुंदरगढ़ कथा हम पूर्व भी पचाइली आ वर्तमान से माने सीओ को पाखो गोटे लेटर भी लिखितवानी सूचना होछि किछि डिटेल्स आसिला किछि वोट वर्जन वर्तमान सुधा आमको कोनसी चिट्ठी आसी नै किंतु चुनाव आयोग रो नियम रही छि कि पोलिंग ऑफिशियल्स मस्ट बी प्रेजेंट देयर even if it is zero polling there is no law under the RP Act provisions that a person can be forced to vote so gatot chunav I think first phase re bhi gote jode booth re zero polling heitala that is not an issue so long as the polling parties are present ab jemti apna janithibe gatokali jo 30 number booth Firingia re jo thila joti ki amar polling party jai pari nathile sei jaga re amar चिंता थिला कि polling party केमती पहुंचबे amar चेष्टा रहिला आमे तांको पहुंचाई पारलु because there are various options before us nothing says to risk your life and polling party should be present it is for the people because it is not the election commission against whom you have somebody's road has not been constructed election commission cannot be held responsible for that it is for the government Sir, feeling here kichhi see it is let us wait for the time because I am very much concerned with the safe return of my people. Every life lost is a very sad thing. And let me tell you, that young girl who died yesterday was very, very unfortunate. We've already got the approval of the finance department. I sent the file immediately yesterday evening. We've already got it. We are notifying, and once we get the formalities completed, the PM report and the legal health certificate, then we'll do it. Yes, sir. Sir. बूथ भितरे live no that is not supposed to be done that has been communicated to all your friends everyone see who is showing it you are showing it see I have communicated to everybody the passes have been given the law is that you cannot take a photograph inside the booth forget about a video that's the law सर वन मोर थिंग सोशल मीडिया रे वर्तमान भी बहुत सारा राजनीतिक दल रो वायरल होची हमने पैसा बांटु छथि इलेक्शन कमिशन हाथ रे किछि पड़लन किछि एक्शंस निया गलनि बिकॉज़ सेकंड फेज इलेक्शन चल there are see I'll tell you there are two parts of it right. one is that the MCC violation anywhere whether it is social media or it is any media if there is any illegality bribing of voters then obviously the law of the land and the IPC provisions will be applicable. The second part is the use of social media for advertisements which are not approved by the MCMC committee. There is a thing called Media Certification and Monitoring Committee. So for that the commission has made certain provisions that we write to the the Twitter, the Facebook and I think one more, there are 3-4 Instagrams and like that Facebook. So it is routed through the Facebook and then we write to them, they take certain number of hours and then they remove the post. A lot of posts have been removed. Yeah. Sir. Yeah. I think I'll have two questions and because I've got a lot of work to do. Yeah. That is why I don't do the meeting here actually. There are two allegations by the BJP we heard. One is that they pointed out the sensitive booths they pointed out have not been taken care of and instead
the booths, they are stronghold. That have been marked, they have been marked sensitive booths. So that has been designed to suit the ruling party. One. Second, the poll violence since has cropped up this time too much. So any extra forces or something like that you are seeking for the third phase and fourth phase, sir? Okay. Your second question first to be answered. No, we are not seeking, because even if we seek, the Ministry of Home Affairs is not in a position to move the forces, because the elections are general elections and we have got forces less than what we got in 2014. So, but whatever we has been given, we cannot. Could you please give the figures? Those figures will be with the police officers. See, those details have been given earlier, shared earlier, how many companies have come and all that. So at this belated stage, you cannot get any extra company, because this is decided in advance. And since these are simultaneous elections for us and the countrywide elections, general elections, so the number of companies that we got this time is less than last time, number one. Your second question, let me clarify that the worry list, we call it in our parlance, the worry list of the candidates. Every candidate has a right to give their worry list. Now that worry list is given to the district authorities, because the final force deployment plan is done with the approval of the observer, Central Election Commission observer, in consultation with the superintendent of police and the district election officer or the returning officer, that is the district collector of the district. So this is the final authority who take a call, and the general observer has been given the powers only for this very reason, so that he takes a unattached, unbiased and an objective decision based on his assessment of the situation and the inputs given by the collector and the SP. Having said that, with the limitations of forces, CAPF cannot be reduced to less than half a section, which means if a platoon has, if a company has around 3 platoons, so as per their protocols, you cannot reduce it by half a section. So you cannot afford to give CAPF in every booth, and every person wants that you give every booth CAPF, and that means you put 4 people in a booth, you require probably 25 companies for a district, and probably we have got something like 30 or 40 extra. So it's not possible. I think that's it. Thank you. It is for the concerned constituency where the elections are held, which means, let me clarify, that interviews and any kind of political interviews cannot be given. Any kind of political interviews, any kind of this thing. But campaigning goes on. So, suppose today polling is there in, let's say, Aska, and Mayurbhanj probably is in the 3rd or 4th phase, or both phases. 3rd phase, Karangia part is there in 3rd phase and the rest is in 4th phase. So if a candidate is campaigning, or if the star campaigners or the leaders of the party are campaigning in Mayurbhanj, that is absolutely permissible, because that is beyond the silence area. But as so far as the press conferences and other things are considered, because the reach is such that you cannot restrict the press conference only to the non-silence area, and therefore press conferences and other things are banned. That is why I had given a letter reiterating the instructions of the commission yesterday. Thank you, sir. This is the last, and after this I'm leaving. Are the prisoners allowed to cast the vote? Yeah, there is a provision. So what is the procedure?